Yes, good morning, good morning. In the morning, even so many people are coming for the class. That's a good sign. तो भी मतलब पहले ही लोग इतने सीरियस हैं क्लास में. ओके, तो लेट्स सी. यूजुअली मोस्ट ऑफ द टेस्ट में स्टार्टिंग में तो बहुत लोगों को जिसे कहें दे आर वेरी मच इंस्पायर्ड इन द स्टार्टिंग, but keeping the same inspiration all throughout the year, all throughout that 7 to 8 months or a full 12 months is a fight. But then also, I should respect whatever people are coming. So, yes. Yes, yeah. Yes, Rajiv, हर क्लास में एक पर्सपेक्टिव इम्पोर्टेंट होता है. हर क्लास में इम्पोर्टेंट होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव अवर ऑब्जेक्टिव्स वेरी क्लियर. तो अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे. हाँ जी, यस. No, Rajiv, the point what I'm trying to say is you should be very clear about the perspective. Yes. 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 See, all the teachers have their own way of teaching, and I always put the perspective first. I talk about the objective first. Yes. See, yes. Yes, why question is the most important. Yes. Yes. Even in the when you talk about any MBAs, yes, why question is the most important. No, the I'm talking about when you go for an MBA and in the interviews, if you are not able to answer the why question, then you're obviously not going to get selected. And वैसे तो कोई भी मैनेजमेंट स्कूल्स आपको आंसर नहीं देता है कि why you're not selected, but there are some business schools which revert by saying that exactly why they haven't selected you, and most of the times the answer is why you are not able to answer why MBA. So that's why is the most important question. I'll start this class with why. Yes. Yes, why not? Okay. अभी कितने लोग हो गए? So 137 हो गया. So we'll start. Okay. Let the other people keep on joining. Okay. So what exactly I'm doing right now? Okay. Today the session is about the verbal session. Okay. Verbal. As some students pointed out, I'll put the perspective first. Okay. Before starting any journey, you should be clear about 3 questions. Okay. The first question is why. This is the most important question if you are going for any endeavor. कुछ भी करना है, आपको why question का आंसर पता होना चाहिए. How? चैटिंग बहुत हो रहा है, बहुत आप चैट मैसेजेस कर रहे हैं. Why is देखिए why is the most important? Yes. Yes. And third is the what. What exactly is why? I'm answering. Please don't send so many chat messages. थोड़ा ज्यादा हो रहा है. आप प्लीज सुनिए पहले. I can understand the doubt. Yes. I'll take all your doubts. The audio video will be there for the last around 20 minutes of the class. So you can all talk, have your videos, everything. Okay. अभी थोड़ा सा सुनो. I understand. I am answering your chatting, but पहले सुन लीजिए. अच्छा, okay. Coming back to the question why. See, I'll put a very simple analogy to you. Let's say मैं कहीं अभी जाना चाहता हूँ. I want to go somewhere. So I should be clear, very much clear about where exactly I'm going and why I'm going there. Should I not be clear about that? So I'll also start this class with the why. Now, this all test, when what we are talking about right now are the IQ test. आप GMAT का बात करो, CAT का बात करो, CUET का बात करो. Yes. No, I will use English as well as Hindi. Yes.
See, all kind of students are there. I can understand. Some South people, yes. I can understand you. I do understand that you're not able to understand Hindi. But I'm using both the languages actually. I'm trying to speak every sentence in two languages. Yes. So when we talk about any IQ test in particular, whether it is a GMAT, CAT, or a CUT, every test is checking your IQ actually. So what exactly IQ test checks? I'm talking in the perspective of verbal here. Okay, I am taking verbal session, not DILR today. Yes, yes. So an IQ test. Let me put some options in front of you. Does it checks your grammar? Does it? Okay, please wait for the other options. Yes, yeah. Does it checks your literary skills? Does it checks your reading skills? Does it checks your knowledge? Or does it checks your understand? What exactly an IQ test checks? IQ test never checks the grammar. Good. So everyone is getting a knack of it, okay? Yes, good. IQ test even doesn't check your literary skills. Even it doesn't check your reading skills. Even it doesn't check your knowledge. So it checks your understanding. So that answers your question of why. Why we are talking about comprehension or understanding. So this class title is The Art of Comprehension, Understand Without Understanding. Yes, I'll come to it. I understand. I'll come to the point. Okay, let me build it up. Build the class rather than just yes. So we are talking about the comprehension. Now, I'll give an example of the CAT right now. Okay, what are the things they are discussing? They talk RC, they talk para summaries, para completion, odd one out. What is the thing which is common among all these four? There's something which is very common among all these four. What is it? Very active audience today. So with 6 baje bhi everyone is active. Good. Anji. Yes, you are right. So every person is able to understand it. So actually, if these all are only talking about the understanding. Yes, I'll also include one more point here. Okay. I'll also include vocabulary. Does it checks your vocabulary? Actually, it doesn't. So you must have आपने काफी experts का सुना होगा and many experts बोलते भी हैं आप vocabulary बढ़ाइए. Many people even talks about the reading skills, the reading speed and everything, but it doesn't checks actually. Vocabulary, if you are able to understand your graduate level books, let's say you are in BSc Physics, let's say you are doing BTech, let's say you're doing MBBS, or let's say even you're doing BA or BCom. If you are able to understand your books, then you have a good vocabulary. Okay. And in any comprehension or any test which checks your understanding, you actually don't need to understand each and every word. So that stands for
So always when we're talking about any IQ test, it never wants you to understand each and every time. It just wants you to understand the main idea. If you are able to understand, let's say you read through a passage, let's say you read through para summary or a para completion, and if you're able to understand it, just understand it, you would be able to answer each and every question with 100% accuracy. So the idea is not to understand each and every word. You don't need a Shashi Tharoor kind of a vocabulary that understanding. You don't need to be a dictionary. This is not a literary test. This is not a test of your English. English is just taken as a language here. Now, what does that mean? What I mean by English is just taken as a language. Any IQ test, let's say, always most of the IQ tests will always talk about two main sections. That will be one would be quant, and the other would be the verbal part, the English part. Quant मतलब मैथ्स या इंग्लिश. ये मैथ्स और इंग्लिश ही कौन चेक कर रहे हैं? ये चेक नहीं, मैथ्स और इंग्लिश चेक कर ही नहीं रहे हैं. Maths and English is they are the most universal languages. That's why the IQ test uses these two languages. What exactly it means is, what is the most universal language in the world? It is maths. Even if you don't know how to speak, you will talk maths in the sign language. Maths is the most universal language. Even the people will not be, let's say there is a tribe who is not even able to communicate, there is no language. See, every tribe would be able to communicate, but there can be a situation that they may not have a language. Let's say I'm talking about prehistoric man when they were not able to speak, let's say, then also they had a sign language. So maths is the most universal language, and that's why maths is taken as a language. And English is also taken as a language. They are not testing your math skills. They are not even testing your English skills. So why this perspective is important? Why this whole thing is important, that I'm so much thumping on or putting my onus on that the comprehension is the most important part. अगर आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो आपको जर्नी भी क्लियर होगी, आपके एफर्ट्स भी क्लियर होंगे. तो आप ये समझ लीजिए, आपका इंग्लिश चेक नहीं हो रहा है वर्बल में, आपका आईक्यू टेस्ट हो रहा है, और आईक्यू टेस्ट का पूरा बेसिस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है. मैं इसका एक एग्जांपल भी दूंगा आपको. अभी मैं एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज लूंगा और अभी के स्लॉट का लूंगा. CAT 2023 का एक स्लॉट लेते हैं. It will be relevant for CUET and even for the GMAT people. It's just a kind of what we call it as एक पैराग्राफ है, एक पैसेज है जिसमें 4 पैराग्राफ्स हैं. तो हम क्या उसमें देखेंगे कि विदाउट एनी स्ट्रैटेजी, सिर्फ आप अगर अपनी कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान रखते हैं या सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान रखते हैं तो आप सारे आंसर्स कर पाते हैं. सो देयर इज नो नीड फॉर यू टू हैव सो मेनी स्ट्रैटेजीज. आपको बहुत लोग काफी स्ट्रैटेजीज बताते होंगे. पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, आप पहले फर्स्ट लाइन पढ़िए, लास्ट लाइन पढ़िए, वो आपको पर्सपेक्टिव दे देगा, वो आपको बता देगा कि ये आपको आता है कि नहीं. देयर विल बी मेनी स्ट्रैटेजीज. पीपल विल से कभी पैसेज को उल्टा करके देखिए, लेफ्ट से देखिए, राइट से देखिए, कीवर्ड्स देखिए, कीवर्ड्स मेन कीवर्ड्स देखिए, ऑल दो देखिए, एनी कॉन्ट्रास्टिंग कीवर्ड्स देखिए. अब काफी लैंग्वेजेस लोग यूज करते हैं, मुझे वो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री कीवर्ड्स देखिए, कॉन्ट्रास्टिंग देखिए, लिंकिंग कीवर्ड्स देखिए. लेकिन एक्चुअली आपको बताता हूँ एज अ टीचर ऑफ वर्बल, एंड आई हैव simply telling you that you don't need any strategy if you are understanding it well. तो अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या बेसिक स्ट्रैटेजी चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए. मैं आपको बताता हूँ क्या बेसिक आपको करना है. एक आरसी लेंगे. जस्ट मैं अपना एक पॉइंट को पुट फॉरवर्ड कर रहा हूँ. पहले तो पर्सपेक्टिव आपको क्लियर हो गया. अब ये आपको क्लैरिटी है, सब सो गए हैं या आंसर करिए. एवरीवन इज क्लियर? यस यस यस, वेरी गुड. तो मैं ये पर्सपेक्टिव आपको दे रहा हूँ. बेसिकली मेरा पॉइंट क्या है कि हम जर्नी से पहले अपना ऑब्जेक्टिव को
क्लियर कर लें। ये तो बताओ कहाँ जाना है। हाँ जी। ठीक है, अभी अभी तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स प्लीज आस्क। यस। See, what other teachers are doing, I can't comment on that. I always take the perspective. पहले मुझे objective clarity होनी चाहिए. I want you to have an objective clarity. Yes. देखिए, अभी एक आरसी देखेंगे। ये कैट 2022 का, सॉरी कैट 2023 का स्लॉट 2 का एक पैसेज है। मीडियम डिफिकल्टी है, तो थोड़ा सा आप समझने में करेंगे, हम वो मुश्किल होगी लेकिन आसान है मेरे ख्याल से। आप जस्ट अपना एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक ही स्ट्रैटेजी है। क्या है वो स्ट्रैटेजी? ये है स्ट्रैटेजी। ओके, अब सिर्फ अंडरस्टैंड, हम सिर्फ ये कोशिश करें। ठीक है, हम ना तो हम डिक्शनरी बनेंगे, ना ही हम वर्ड्स को बहुत समझने की कोशिश करेंगे। हम मेन मेन मैसेज समझेंगे कि उसका मीनिंग क्या है, मोटा मोटा मीनिंग। हिंदी हिंदी लोगों के लिए मोटी मोटी बात समझेंगे। एंड फॉर द इंग्लिश पीपल, the people who understand English, how we will try to understand the bigger picture, okay, the bigger meaning, okay, the main idea. Yes. तो हम इसमें सिंपल एक चीज करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक अभी पैसेज आने वाला है जिसमें पैराग्राफ्स हैं। हम्म, 3 पैराग्राफ्स। तो पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक चीज करेंगे, हम समराइजेशन करते जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम समरीज बनाते जाएंगे। तो हम पैराग्राफ 1 का समरी, समरी मतलब आप 6 to 8 लाइंस में आप अपना बात बोलेंगे। ठीक है, आप यू विल गिव योर समरी इन a sentence which will not exceed 7 to 8 words. अच्छा जी। अच्छा, इसमें I want to quote one quote which I always put in the reading comprehension passages. Benjamin Franklin, I think you must be knowing about Benjamin Franklin, used to say that if you want to be a good reader, I'm talking about the reading, always read with a pen in your hand. Why? Always read with a pen in your hand, even if you're reading anything. Why it's more important is take notes, take summarization. You should be always be clear when you are taking a journey of, let's say, different passages. You should be always be clear ki where exactly you are going, and you will always keep a tab on your understanding. अच्छा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा, रीड विद पेन। अच्छा जी, जब हम सेकंड पैराग्राफ की, जैसे कि हमने बात किया था कि पैराग्राफ 1 विल हैव 1 लाइन समरी, इन द सेम वे in the second paragraph we will have 2 line summary. Okay, the second paragraph will have paragraph 2 summary and paragraph 1 and 2 summary. अच्छा जी, now in the third passage what we will do is, नो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई कीवर्ड वीवर्ड नहीं बोल रहा हूं मैं, वोकैबुलरी कीवर्ड, बिग जगलरी ऑफ कीवर्ड्स, कॉन्ट्रास्टिंग कीवर्ड्स, ब्ला ब्ला ब्ला, लिंकिंग कीवर्ड्स, डोंट गो इनटू इट। बहुत चीजें तो मार्केटिंग की तरह बोली जाती हैं, तो आप उसमें मत घुसिए। आपको टेस्ट में फर्स्ट आना है, ठीक है? यू डोंट हैव टू बी स्पेंडिंग टाइम इन ऑल दैट जगलरी। ओके, अच्छा, थर्ड पैराग्राफ में, इन द थर्ड पैराग्राफ व्हाट यू विल डू इज you will give a summary of the third paragraph, and the second summary should be paragraph 1, 2, 3 summary.
And what exactly this will give you is your main idea. And that's what any comprehension will talk about. हर comprehension basically, मतलब हर comprehension in the sense कि हर IQ test आप आराम से इस कर लेंगे अगर आप ये छोटी मोटी चीजें देखें. ओके, आप आरसीएस में या कोई भी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस में 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं. एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, कभी भी नहीं आता. ये आता है प्राइमरी लेवल पे, हाँ 10th के नीचे आता है. ना CUET में आएगा ना उसमें आएगा, कैट जी में तो बात ही नहीं. अच्छा, सेकंड काइंड ऑफ ए क्वेश्चंस विल बी मेन आइडिया बेस्ड क्वेश्चन. मेन आइडिया वो ऐसी बातें करेगा जैसे आप समराइज करिए, समरी पुट करिए, टॉपिक क्या होगा, एंड व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. थर्ड काइंड ऑफ ए थिंग वुड बी the critical reasoning based question. Now this will you will have critical reasoning. I'll take the one more session of critical reasoning in the next session. And now in the critical reasoning what exactly will happen is इसकी वो कैसे बातें करेगा, वो ऐसे वर्ड्स यूज करेगा आपको, premise, assumption, conclusion, inference. These kind of a thing they will talk about. अभी मैं CR सेशन नहीं ले रहा हूँ तो आई नॉट मूव, थोड़ा सा डेप्थ पे नहीं जाऊंगा इसके, लेकिन फिर भी मोटा मोटा बता देता हूँ. इन द आई गिव यू जस्ट मीनिंग्स ऑफ दैट. Premise is just the facts, okay? Any proofs, any evidences, blah blah blah. Okay, I'll teach you in the next session. Assumption is which is not stated in the passage or a paragraph, which is not stated will be called an assumption. Conclusion is the author's conclusion. Usually every passage, जब भी कोई author लिखता है, अब आप पूछेंगे लिखता है क्यों है, लेकिन जब भी कोई author लिखता है तो वो conclude करता है. तो उसको कुछ पर्पस होता है, मतलब वो क्यों लिखेगा, कोई क्यों लिखता है, तो एक उसका एक पर्पस होगा जो उसके कंक्लूजन में दिखेगा. ओके, तो ये उसकी बात हो रही है. इन्फ्रेंस होता है आपका, आप इन्फर करते हैं. मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं एक पैसेज पढ़ूं, मैं इन्फर करूंगा कि ये मतलब हो सकता है, लेकिन कंक्लूजन एंड इन्फ्रेंस में फर्क ये होता है कि कंक्लूजन इज ऑफ द ऑथर्स and inference is yours. आपका कुछ भी इन्फ्लुएंस हो सकता है. I'll give an example to you. थोड़ा सा फनी एग्जांपल देते हैं कि शाम को कोई जा रहा था तो किसी ने मतलब किसी ने पिया हुआ था अच्छी तरह, वो गिरा हुआ था रोड पे, नाली में गिरा हुआ था. तो दो लोगों का डिफरेंट देखिए इन्फ्लुएंस क्या है. पहला इन्फ्लुएंस, एक आदमी उसे जाके उठाता है और उसे हेल्प करता है, उसे घर पहुंचा के आता है, और दूसरा आदमी उसे कहता है वाह 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 बस पी के गिर गए. Now he took lot of liquor and is just lying on the road. So he said ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए. Now there are two different people having two different inferences. One inference is the person who helped is talking about कि उसे help करना है मुझे, और second person उसको कह रहा है, उसे एक फन के रूप में कह रहा है कि पिएगा तो he should be lying on the road only. Yes, you can have any inferences, correct. Yes, yeah, correct. आज क्लास में बहुत चैटिंग हो रही है. अच्छा, ओके. अब हम अपना जो हमने अभी स्ट्रैटेजी की बात किया था, तो वी हैड ए टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी पार्ट. तो यही स्ट्रैटेजी है, ये आपकी स्ट्रैटेजी हर कॉम्प्रिहेंशन के लिए. आप सिंपल हम इसी चीज पे फोकस करेंगे. पहला फोकस ये चीज पे हमारा फोकस रहेगा, और हम ये नॉर्मल चीज करेंगे तो हम बेंजामिन फ्रैंकलिन बन जाएंगे. एंड वी विल स्टार्ट विद, वी विल रीड विद ए पेन इन हैंड.
it's not a pen, it's a stylus, but then also take it as a pen. Acha ji. I'm just opening one of the passage I picked from the CAT 2023 slot 1. Anji. पैसेज बढ़ टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ, अब ये चीजें देखने वाली हैं। अब डिफरेंट आईक्यू टेस्ट देखिए कैसे आपके साथ प्ले करते हैं। जब हम बात करते हैं सीयूटी लेवल या इवन कैट लेवल का, तो ये जाएंगे ऐसे, जैसे ईओन पे जाएंगे, साइंटिस्ट पे जाएंगे, गार्डियन पे जाएंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स पे जाएंगे, और ये द इकोनॉमिस्ट पे जाएंगे। जी, ये यूजुअली जब कैट के इवन जो क्वेश्चन देखते हैं, ये सिंपली पिक पैसेजेस होते हैं। मतलब इन्होंने अपने आप they even have not made their passages. In the GMAT, what we see is usually they have an inspired passages, but most of the passages they themselves make it. But in CAT, it is usually picked up from these kind of magazines. कोई भी मैगजीन हो सकता है, जैसे कि एक स्लॉट 3 कैट का क्वेश्चन एक इससे लिया था, ग्रेट पोल। आई वाज इवन लुकिंग एट द पैसेज, वही लेते हैं जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, नहीं तो इट बिकम्स वेरी बोरिंग एक्सरसाइज। एक और पैसेज मैंने कैट 2023 का स्लॉट 3 से था, ये नटमेग वाला, ये इन्होंने लिया है द थर्ड पोल से। दिस व्हाट इज द थर्ड पोल? थर्ड पोल इज एक क्लाइमेट के ऊपर एक मैगजीन। दिस इज अ मैगजीन व्हिच यूजुअली राइट्स अबाउट climate changes, environment, and other challenges. Okay, before moving to the NetMech course, we will have the Netflix one. Okay, this is a slot 2, CAT 2023, slot 2, slot 2, the one of the reading passage. So the passage talks about the Netflix actually. And this passage actually starts from here, Umberto. I'll just read through the thing and we'll just keep simple things in our mind. What exactly what we will do is we will keep एक लाइन का summary, दूसरा लाइन हमारा जितना हमने पढ़ा है वो summary, and we will be able to, till the time we would be completing our passage, we would be very clear about our main idea. And if you are clear about the main idea, 50% questions are already answered. Now, what the most important thing, what we're going to do is we will do only one reading. If you are reading twice, you are already dead. In most of these tests, time का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उससे क्या होता है कि इतना टेंशन होता है, मोस्ट ऑफ द पैसेजेस के लिए आपको 7 to 8 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा। सो वन रीडिंग, अगर आप 2 रीडिंग कर रहे हैं तो यू आर ऑलरेडी डेड। ओके, फर्स्ट रीडिंग में यू शुड बी वेरी क्लियर क्या चीज कहाँ पे है, so that I can always get back to it in the second. If the question asks, you want to read the question first and all, you can do it. But then also, you have to understand the passage first. So let's have an understanding of the passage first, okay? Okay. Now, I'll just read through the first paragraph, okay? Umberto Eco, an Italian writer. It's an Italian writer, so I'll reread it. It is Umberto, because they will not say TS. They usually will pronunciate that the. So we'll say Umberto Eco, an Italian writer, was right when he said the language of the Europe is translation. Okay, so here is a very important thing, translation. Okay, Netflix and other deep-pocketed global firms speak it well, just as the EU employs a small army of translators and interpreters to turn intricate laws or impassioned speeches of the Romanian MEPs into the EU's official languages. So do the likes of Netflix. They are saying Netflix actually is translating a lot of things. Now let's look at the second line. Impassioned. Impassioned means passionate. Okay. Speaking of Romanian MEPs. I don't know what is an MEP. I don't even care. Okay. Are you able to understand the main point here? Without understanding even the MEP and what is they are talking about? Yes, you are. So what we understood till now is that the translation is
big thing. So that's our summary. Translation is big. Okay. It now offers dubbing in the 34 languages and subtitling in a few more. The result is that Capitani, a cop drama written in the Luxembourgish, a language so modest that it is not even recognized by the EU, can be switched in any other English, French, Portuguese. The point they're saying is a small program even is available in all kinds of languages. Okay, you made a point. Before, a top French show could be expected to be translated in English and perhaps German only if it was successful. Now it's the norm for any release. So what is the main summary of this passage? Yes. कितने बच्चे हैं? प्यारे बच्चों 152. हाँ जी. तो I need 152 answers. मैं पढ़ूंगा कैसे वो मुझे पता नहीं, लेकिन I need answers. So what is the main summary here? मेरे प्यारे बच्चों, बताओ. Very good. Yes. Translation. Everyone is focusing on translation. Yes. So you got the understanding, and that's what is the only thing needed. Now, okay, the second paragraph I'm reading. Yeah, I got it. Everyone got it. Yes, please stop the chat now. Yeah, please. Actually, it keeps on popping on the screen. Yes. Hanji, yes, you're right. You got it. Yes. Very, very bright students. Yeah. The economics of the European production are more appealing too. So they have given the reason now. Everything has a reason. So money becomes a reason here. Well, everything is the money, isn't it? Yes. The economics of the European productions are more appealing too. American audiences are more willing than before to give dubbed or subtitle viewing a chance. This means shows such as Lupin, a French crime caper on Netflix, can become global hits. Okay, what is a caper? अगर ये समझ नहीं भी आता कुछ नहीं फर्क पड़ता है. You understood the meaning, but then also let's talk about the caper. Verbal session, and so why not to take it? Caper means anything playful, a playful dance kind of a thing. Can you give any sentences on caper? Good. Acha, you understand what is a caper? Okay. Acha, okay. Acha, why everyone is giving the same sentence? Children are caper on the street. Why everyone is giving the same answer? I think सभी वो एक ही जगह से कॉपी कर रहे हैं, लग रहा है. All the people are from all over India, लेकिन everyone has the same answer. अच्छा, ये सब मत करो. आप कहीं से कॉपी पेस्ट मत करो. What will happen is आप लर्न नहीं कर पाओगे. आप अपने दिमाग लगाओ. नहीं आता तो it doesn't matter, but don't copy and paste. उससे क्या आपको प्रॉब्लम होगा? आपका माइंड डल होता जाएगा. कॉपिंग इज इजी. आजकल मैंने बहुत लोगों को देखा कि एआई से अपने आंसर्स बनाते हैं. रीजनिंग के भी आंसर्स बना लेते हैं. बना लीजिए. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन यूजिंग एआई, बट ऑलवेज कीप इन माइंड दैट यू शुड नॉट मेक योर माइंड डल. एक्चुअली माइंड का एक देयर इज ओनली वन थिंग, वन ऑर्गन इन आवर ह्यूमन थिंग, ब्रेन, जिसका जितना यूज होगा वो उतना ही शार्प होगा. आप प्लीज ब्रेन का यूज करिए. कॉपी पेस्ट एआई को मत यूज करिए. इट विल मेक यू एन हैंडीकैप. यूज करिए लेकिन वाइजली करिए. ओके. अच्छा, नाउ it is worth taking a punt on an expensive retelling of an early 20th century detective series about a gentleman jewel thief in Paris. If it has the potential to explode through France. In 2015, about 75% of the Netflix original content was American. Now the figure is half. Okay, 2015 में 75% था, अब half हो गया है. According to the Empire Media Analysis Company, Netflix has about 100 productions underway in Europe, which is more than public broadcasting in France and Germany. So what the point अब वो economics एक reason दे रहे हैं, economics का reason दे रहे हैं, और उसमें उन्होंने लूपिन का एग्जाम्पल दिया. उन्होंने ये कहा कि 2015 में नेटफ्लिक्स अराउंड 75% उसका अमेरिकन था, लेकिन अब half of it is यूरोपियन. नेक्स्ट पैराग्राफ. अब ये सेकंड पैराग्राफ का जब हम करेंगे तो दो समराइजेशन करेंगे. इसमें एक समराइजेशन सेकंड पैराग्राफ का होगा और एक समराइजेशन 1 and 2 का होगा. वो आपको मेन आइडिया टिल पैसेज 2 दे देगा.
Third paragraph. And European officials will restrict to encourage investment. European filmmakers rival farmers in the ranking of the cosseted European industry. What is a cosseted thing? What is the word cosseted? The cosseted word basically is for favorite या आपको दुलारा बच्चा, जैसे आप मेरे दुलारे बच्चे हैं, तो you are the cosseted students. Okay. To operate in the EU, streaming companies are required to ensure at least 30% of their catalog hails from the block and to promote it. Buying a back catalog of 1990s Belgian soap opera and hiding them in the digital dash data does not count. Doesn't count. France compels big media firms to kick back revenues into domestic production. If the European government's intent on shaking down big American, it's better for everyone that the money is spent on them, something watchable. So the point they are making is, the European people are also asking every streaming firm कि आप हमारे यहाँ भी पैसे लगाइए, सिर्फ हमें एक मार्केट की तरह मत यूज करिए, हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन करिए, और जिसकी वजह से एंड दैट्स वेरी वाइज, वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे करिए, जिसकी तभी आप स्ट्रीमिंग आपको राइट्स मिलेंगे, एंड दैट्स अ वेरी वाइज डिसीजन बाय एनी गवर्नमेंट. मार्केट ही थोड़ा देना है, सिर्फ उनकी कमाई थोड़ा करना है, आपको अपने सोसाइटी को भी ऊपर करना है. Not everything works across borders. Comedy sometimes struggles. Who done its bloodthirsty maelstrom between arch Romans and uppity types and have a more universal appeal. So comedy वो कह रहे हैं struggle करता है. और who done its and bloodthirsty maelstrom. What is a maelstrom? हाँ जी, आप चैट कर सकते हैं, बोलिए maelstrom क्या होता है? हाँ, yes, bloody fights. Yes, very good. Yes. हाँ, आपको जरूरत नहीं. द पॉइंट इज मेल स्टॉर्म को बिना समझे भी ये मैं समझ पाऊंगा. लेट्स से मेल स्टॉर्म है, समझना है, मैं नहीं समझ, मुझे आया नहीं समझ. Let's read it without maelstrom. Okay, not everything works across border. Whodunits and bloodthirsty between arch Romans and uppity tribesmen have a more universal appeal. It gives you the meaning, isn't it? तो वोकैबुलरी पे इतना मत ध्यान दीजिए. यू शुड बी हैविंग एक ग्रेजुएट लेवल वोकैबुलरी होना चाहिए आपको. अगर अपना बुक समझ आ रहा है तो यू आर फाइन. अच्छा जी. Not some the Babani said German television is not always built for export, says one executive, being polite. A bigger problem is that national broadcasts are still dominant. अच्छा, मतलब जर्मन का काम चीज ठीक नहीं है. Streaming services such as Netflix or Disney Plus account for about a third of all the viewing hours, even the markets where they are well established. Europe is an aging continent. Generation of teens staring at phones is outnumbered by their elders who prefer to gawp at the box. Gawp means क्या हुआ? Yes. इंग्लिश में लोग तेज हैं या डिक्शनरी ओपन किया हुआ? गॉप मतलब होता है स्टेयर. यस. लेकिन विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग आप समझ पा रहे हैं. विदाउट अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट वर्ड्स इवन आप बेसिक पॉइंट समझ पा रहे हैं. तो इसका बेसिकली पॉइंट क्या है कि कॉमेडी नहीं कर चलता है, जर्मन का नहीं चलता है यूजुअली. ये ब्लड थर्स्टी, ये काइंड ऑफ ए ब्लडी फाइट्स एंड ऑल बहुत चलता है. अच्छा जी. नाउ in Brussels, a national capital, the prospect of Netflix as a culture hegemon is seen as a threat. What is hegemon? Hegemon होता है कोई बहुत चीज पावरफुल, बड़ी सी मतलब दानव आ गया. Anything very powerful will take it as hegemon. So cultural sovereignty is a watchword of the European executives, worried that the Americans will eat their lunch. Okay, so they are protective about their country. That's very fair. To be fair, Netflix content sometimes seems stuck in an uncanny valley somewhere in the mid-Atlantic. Mid-Atlantic मतलब America, North America, with local cooks stripped out. Netflix originals tend to have a fewer specific cultural references that shows produced by the domestic, according to the Anderson market analyst. The company used to have an imperial model of commissioning with executives in Los Angeles cooking up ideas French people might like. Now Netflix has offices across Europe, but ultimately the big decision rests with the American executive. This makes European politicians nervous. The point what they're trying to say is anything which is controlled by America, and let's say they're streaming in Europe, what is actually the media companies do? They actually, the communication is the biggest, I would say, the power.
So not all the European people, the European politicians are not very happy with the situation कि अमेरिका उनका कम्युनिकेशन को कंट्रोल करे, तो वो अपनी कंट्री को बचाने के लिए ये बात करते हैं. इट मेक्स सेंस. दे शुड नॉट बी, लेकिन ऑथर को अच्छा नहीं लगा. ऑथर ने कहा नहीं होना चाहिए. An irony of European integration is that it's always American companies that facilitate. Okay. Google Translate makes European newspaper comprehensible. Comprehensible समझ आ गया. Even if it's little clunky. Clunky मतलब क्या हुआ? Clunky मतलब I think difficult. For the continent's non-polyglots. What is a polyglot? अगर मुझे polyglot मतलब समझ में नहीं आया तब भी चलता है, लेकिन polyglot मतलब जो आदमी बहुत लैंग्वेजेस बोल लेता है. मैं 2 बोल लेता हूँ. Yes, I'm also a polyglot. I cannot be called a polyglot. You must have at least more than 2. So I'm not a polyglot. Glot. American social media companies make it easier for the, but I talk 3 languages. Even I talk Punjabi. So I can be called a polyglot. American social media companies make it easier for the Europeans to talk politics across borders. They do not always like to hear what they see about each other in other matter. Okay. Now Netflix and the friends pump the same content into the homes across the content making culture. It goes better. Basically, the point they're making is Netflix actually bringing everyone together. They are actually becomes a communication link between the different regions of the EU. EU stands for the European Union. अच्छा जी, if Europeans are to share a currency, मैं थक गया हूँ पढ़ के. If Europeans are share a currency, bail each other out in times of financial need and share vaccines in the pandemic, then they need to have something in common, even if it is not just binging on the same series, watching fiction, or blah, blah, blah. So the point they are making is that the author is concluding that it is important और ये चीज मतलब उन्हें डरना नहीं चाहिए, and that's more of a bringing all the people, European Union people together. Now talking about some of the questions. Okay. Now the question number 1, based on now what we have done is we have done nothing. We just try to understand the passage. We read it once. Okay. So पहला point क्या है? We read it once. दूसरा point क्या है कि हमने उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया, और थर्ड हमने सिर्फ समराइजेशन किया. हर पैराग्राफ को समराइजेशन करते रहेंगे तो लास्ट में जब आपके पास लाइन आएगा वो मेन आइडिया का लाइन होगा. और आप बेसिकली इसका मतलब है रीडिंग में ही आपने 50% क्वेश्चन आंसर कर दिया. यूजुअली मोस्ट ऑफ द आईक्यू टेस्ट विल हैव 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस. यहाँ पे एक मेन आइडिया क्वेश्चंस होंगे और दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके सीआर बेस्ड क्वेश्चन. ये एक सीआर बेस्ड है, तो लेकिन फिर भी मतलब आप 50% ऑफ क्वेश्चन जस्ट रीडिंग में ही आंसर कर पाएंगे. बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट. तो ट्रू ढूंढना या फॉल्स ढूंढना? वाह, तो प्यारे बच्चे सुबह भी काफी एक्टिव है. हमने फॉल्स ढूंढना है. पहला पढ़ते हैं. ओनली हाफ ऑफ द नेटफ्लिक्स ओरिजिनल प्रोग्राम इन द यू इज नाउ प्रोड्यूस्ड इन अमेरिका. ये तो सिंपल फैक्ट है, लिखा है बिल्कुल पैसेज में लिखा हुआ है. कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा है. Netflix has been able to transform itself into a truly European entity. लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ है, वो तो फाइट कर रहा है. लेकिन ठीक है, ये सेकंड हो सकता है, लेकिन हमें पढ़ना सा रहा है. क्यों? क्योंकि आईक्यू टेस्ट में कोई चीज सही गलत नहीं होती है. ऐसा हो सकता है कि चारों ही आंसर करेक्ट हो, तो हमें मोस्ट एलिजिबल आंसर ढूंढना होता है. तो ऐसा हो सकता है कि मैंने कुछ पूछा और चारों ही आंसर सही हैं, ये चारों आंसर गलत हैं, लेकिन तब भी मुझे पैसेज सभी ऑप्शन देखने हैं और एलिमिनेट करना है बिफोर रीचिंग द फाइनल आंसर. आई मे हैव फाइनल आंसर, बट देन आल्सो आई शुड बी वेरी क्लियर कि मैं बाकी चीजों को एलिमिनेट कर पाऊँ. यूरोपियन टेलीविजन प्रोडक्शन हैज अ पोटेंशियल टू बिकम ग्लोबल हिट्स. करेक्ट. National broadcaster dominate in the EU in terms of the total television hours. Yes, also they are correct. National broadcaster dominate in the EU in terms of the notion. कहाँ लिखा है ये? यहाँ लिखा है. Thank you the call cited. Read it. Very read it. Bigger problem is the generation. Bigger problem national broadcaster still dominate. So ये भी. So I reached my answer and this is my answer. So this second is my answer. Is everyone able to understand what happened here?
सब यही आंसर पे रीच कर पाए? ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, यही फॉल्स है। मतलब ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, एक्चुअली में ये फॉल्स है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ट्रू है, ये नहीं है ट्रू, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये मेरा आंसर। सेकंड क्वेश्चन, with the following research findings should weaken the author's conclusion in the final paragraph. अच्छा, फाइनल पैराग्राफ में जरा बताइए, what exactly is the summary you wrote? Good. It brings, yes. Yes, it brings everyone together. Correct, you are right. तो जो भी चीज टुगेदर है, अगर वो उस चीज को वीकेन कर पाए, उस कंक्लूजन को, ओके। तो पहला स्टेटमेंट है, रिसर्च शोज दैट नेटफ्लिक्स हिट प्रोड्यूस्ड इन द फ्रांस आर वेरी पॉपुलर विद द नॉर्थ अमेरिकन ऑडियंस। रिसर्च शोज नेटफ्लिक्स हिट प्रोड्यूस्ड इन फ्रांस आर वेरी पॉपुलर विद द नॉर्थ अमेरिकन ऑडियंस। हाउ दिस इज इम्पैक्टिंग, so this cannot be the answer. It has nothing to do with the conclusion. Research shows that the older women across the EU enjoy watching romantic comedies on Netflix, whereas the younger women prefer historical fiction dramas. It's out of scope. It is nothing. It is not impacting your conclusion at all. Research shows that there is a wide variance in the popularity in viewing. ये आंसर हो सकता है, क्योंकि अगर वेरियंस है तो यूनिफाइंग नहीं होगा, वो मिला नहीं पाएगा, सबको कनेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी हमें फोर्थ पढ़ना है। Research shows that Netflix has been gradually losing market share to other streaming, gradually losing market to Amazon Prime or anything. How is it's impacting the my conclusion? So I have my answer. Any doubts till now? Okay, it's making sense to everyone. Third, based only on the information provided in the passage, which one of the following hypothetical Netflix shows would be the most successful with the audience? Yeah, good question. An Italian comedy show hosted by the international star, comedy show. लेकिन ये तो लिखा था ना, comedy show doesn't work. Yes, comedy some struggles. पहला नहीं. A transatlantic romantic comedy set in the Europe and America. Let me keep it. A murder mystery drama, ये तो है ही, ये भी लिखा हुआ ना, Maelstrom, Bloodthirsty, Whodunits, it will work. And only German तो कहीं वर्क करता नहीं है, कहाँ लिखा है? German is not built for exports. सेकंड और थर्ड में रोमांटिक ड्रामा सेट इन यूरोप, ये कहीं लिखा है क्या? I don't think it's written anywhere. Is it referred anywhere? कहीं रेफर किया था हमने पैसेज में, कहीं रेफर है? नहीं है। वेरी गुड, ओके, तो वी हैव आवर आंसर है। लास्ट, द ऑथर सीज द राइज ऑफ नेटफ्लिक्स इन यूरोप एज व्हाट? सबको पता है ये आंसर, तो इस पे क्या बोलना है, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए, हमें एलिमिनेट करना है। लूमिंग कल्चरल थ्रेट, ऑब्वियसली नॉट। इकोनॉमिक थ्रेट, इकोनॉमिक थ्रेट। फिलिंग एंड इंटरनेट गैप में यूनिफाइंग फोर्स। तो प्यारे बच्चे, क्या सीखा हमने आज? पहली बात तो हमने ये सीखा कि सब हम बेंजामिन फ्रैंकलिन बन जाएंगे और रीड करेंगे ऑलवेज विद ए पेन, ओके, विद ए पेन इन द हैंड। और हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग इज द बिगेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो चाहे वो आरसी हो, चाहे वो पैरा समरी हो, चाहे वो पैरा कंप्लीशन हो, चाहे कि कुछ भी तरह का क्वेश्चन हो, आप आंसर कर पाएंगे। कैट 2022 में पैरा कंप्लीशन के कुछ क्वेश्चन आए स्लॉट 1 में, तो सब जगह वीडियोस बनने लग गए, बहुत सरप्राइज एलिमेंट आ गया, पैरा कंप्लीशन आ गया, ये आ गया, वो आ गया। पैरा कंप्लीशन कभी भी सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। और ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन में आप जैसे भी पूछ लीजिए, बात तो वही रही, चाहे आरसी हो चाहे पैरा समरी हो, इसका मीनिंग सेम ही है। हर चीज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। अगर एक ही क्वेश्चन को हम डिफरेंट तरह से पुट करें, if I'm making the same question in different, I would different ways of sentences writing, it doesn't change the meaning. If I say, my name is Vipul,
and Vipul is my name. I am Vipul. So whatever those sentences I'm using, I Vipul, it makes the same sense. So it's always an IQ test will check your understand, will never check your vocabulary, will not even check your reading skills. आप कहेंगे इतने लोग बोलते हैं रीडिंग 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 क्यों बोलते हैं? रीडिंग आपको एक चीज में हेल्प करता है और वो है फैमिलियरिटी से। आप फेमिलियर हो जाते हैं कोई चीज से, यू गेट फेमिलियर विद द वर्ड्स। लेट्स से जैसे साइंस में या फिजिक्स में क्वांटम आपको पता होगा, रिलेटिविटी यू विल अंडरस्टैंड न्यूटन, यू विल अंडरस्टैंड ग्रेविटेशनल पुल, you will understand the gravity, acceleration of gravity and all. But then also, you just need the basic understandings. In economics, you will understand what is the GDP, inflation and all. But then also, you don't need to be an expert in the eco. You don't need to be an expert in chemistry to know that what is the difference between organic and inorganic chemistry. Organic में hydrocarbons होता है, metallic table में कितने elements हैं, no one will ask about the elements, but then also let's say a basic understanding will help you. Biology में आपको ये पता होना चाहिए codex, non-codex क्या है, what is the phylum, what is the arthropods, what is the andidians, and that for that you don't need to read a lot of things. You just even the NCERT basic books, let's say primary books, let's say even 6th, 7th, 8th books, will make you familiar with that subject. So you don't need to read everything coming your way. Have a targeted reading as a strategy rather than reading everything. I've seen many other videos talking about keep on reading. आपको रीडिंग बहुत हेल्प करता है। आप ये पूछिए उनसे कि व्हाट इज द रीडिंग हेल्प्स। रीडिंग का एक ही हेल्प होता है, आपको वोकैब में हेल्प करता है, आपको रीडिंग स्पीड में हेल्प करता है, और आपको फेमिलियर करता है। रीडिंग इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पीड। जब मैंने पढ़ना ही एक ही बार है, मैंने बार बार पढ़ना ही नहीं है, आई डोंट हैव टू रीड इट ट्वाइस और थ्राइस। If I'm reading it, any of the passages or anything twice, you already did that. In that time crunch situation, you are already dead actually at that time. So it's not about reading speed. It is not even about the knowledge part. तो reading में अगर हम बात करते हैं, ना ही स्पीड मैटर करता है, ना ही आपको नॉलेज मैटर करता है, ना ही आपको वोकैब में भी आपको बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स का जरूरत नहीं होता है। तो द बेसिक आइडिया इज टू गेट फेमिलियर, ये पर होना चाहिए। And you already know what kind of a topics comes in any IQ test. So get familiar with that topic, subject, and you'll be able to answer the questions. Okay. So don't spend your time reading everything. Do a targeted reading. You must be very clear. जब भी कोई कुछ भी बोले, आप उनसे जरूर एक क्वेश्चन जरूर पूछिए. And question is why. Okay. तो जब भी कोई टीचर, जब भी rather टीचर ही क्या, आप जिंदगी में कुछ भी करिए, आप अपने आप से भी ये पूछिए वाई। अगर आपको वाई का आंसर आपको क्लियर नहीं है, वो चीज मत करिए। और अगर वाई का आंसर क्लियर है, तो यू आर गोइंग टू सक्सीड इन दैट एंडेवर। चलो, बहुत ज्ञान की बहुत बातें हो गई। कितने बच्चे आ गए क्लास में? अच्छा, इट हैज क्रॉस्ड 180, ओके 181, ओके। चलो जाइए, दैट्स इट। अब मैं भी थक गया हूँ, 1 घंटे का सेशन हो गया। चलिए, थैंक यू एंड नाइस टॉकिंग टू यू ऑल। बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा आपका। चैटिंग आज ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब इतना चैटिंग आप कर रहे हैं आप। आई एम नॉट एबल टू रीड सो मेनी चैटिंग एक्चुअली। यस, ओके, या, गुड बाय। चलो अपना हैव ए ग्रेट डे।
Okay, and always keep on asking one question to everything. टीचर से भी पूछो, पेरेंट से भी पूछो, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप से पूछो, why? Why is the most powerful question in the world? चलिए, बाय बाय, सी यू.